Hello everyone, welcome back to Ansarkari. So we are taking up 2020 CSAT paper. So we are discussing the first 40 questions. So in the passage, question number one, what is best implied? So I believe option D is most appropriate, that increased social sector spending is imperative for large scale job creation. Option D. Okay, then again another passage, and we have to identify the valid assumptions. So 1 and 2 should be the right ones. Option A. Okay. Then moving further to passage 3, so most logical and rational inference. So here option C, that wetlands need to be reinforced as more than just open sources of water. Option C. Fine. Then passage number 4, so what is being best implied as per the options. So first option A, that distribute your wealth across different kinds of assets so that your risk would be minimized. Option A. Moving to new passage, so we have to identify assumptions in this case. So I believe 1 and 3 are only the most appropriate ones. Option B. Okay, and what is the crux of this passage? So option C, that biotechnology's role is not confined to the current priorities of developing GM crops. C. Fine. So question number 7, we have to identify how many zeros are there at the end of the following product. So we are given with this sequence. So firstly, we just have to break it into multiples of 2 and 5. The combination needs to be 2 and 5. For example, 10 can be written as 2 multiplied by 5. So with this, we have to create pairs of 2 and 5. And for example, here the number of 2 is less than the number of 5s. So we will see what are total number of 2. So there are 10 times 2 is being repeated in this sequence, and 5 is, I think, 15 to 14 times. So the pairs of 2 and 5 would be 10 pairs. So there would be 10 zeros. A. Option Okay, A. then we go fine. Then in 8th, we see that let XYZ be a 3-digit number where the sum of these digits is not a multiple of 3. Then this entire sequence is not divisible by which number. So you can start with 1, 2, and 3. If you see 1, 2, 3, it would turn out to be a multiple of 3. And that is why I took the number 1, 2, and 4. So with this, you can see it is not a multiple of 3 when you are dividing this with 3. We'll be left with, I think, 1 remainder. So given XYZ is 1 to 4, then according to this pattern, you can arrange and you will see that the sum would turn out to be 777. And then just you can check with the options that whether this is divisible or not divisible by 3, 37, and 9. So it is divisible by 3, 37, and their sum. So 9 is the only option. Option B. In 9th question, so P, Q, R, and S, they're natural numbers such that again we are given with this sequence. So you have to identify the largest natural number amongst the P, Q, R, and S. So you can identify that the largest number out of these 4 should be the one from which we are firstly subtracting, and the larger number which we are subtracting, like in this it is 2016, here R minus 2018. So it means larger number is being subtracted. So I believe R should be the largest one. Option C. Fine. So here I have to check this question, that how many 5-digit prime numbers can be obtained, because the way I was solving this, I was not able to get. So I just guessed that it can be 1. Option A. 0. Option A, 0. Fine. Then we have question number 11. So we're given with this sequence and the symbol. So for which digit does this symbol stand? So the easiest way to solve is this, you start putting the options here. So when I put 2 in the place of this symbol, this will not be satisfied. So when I put 3, so you can see that when you total and add them, you'll get 133 also. So it needs to be 3 at every place. So option B. Option B. In 12th, again, if you have 2 straight sticks of 2 different lengths which are given, then what is the minimum length you can measure? So I believe it should be 0.05.
Option B. Option B. Yes, Mansi. Okay. Then 13th, there's a simple mathematical operation in each number of the sequence here. So, although I'm not able to decipher the sequence exactly or directly, but I tried indirectly. Like, firstly, this is the difference between each successive number over here. And then I broke this into, again, that whether that is a sum of 2 and 2 or subtraction. So, 4 minus 2 will get 2. 4 would be 2 plus 2. Then 4 plus 2, we get 6. And then again, you see that these three sequences are repeated. So I believe I can get to the right option. That should be 36. Option C. C. 6 होगा शायद इस पे अल्टरनेटिव पे 14 से 20 18 से 24 इस तरह से हो शायद 6 का कैसे कैसे आएगा नहीं, क्या सीक्वेंस है, एक बार अच्छे से एक्सप्लेन करो। 6 का होगा शायद अगर हम एक को छोड़कर नेक्स्ट पे जाते हैं 14 से 20 पे जाएंगे 6 का डिफरेंस है 18 से 24 पे जाएंगे फिर 6 का डिफरेंस है फिर 20 से नेक्स्ट डिजिट क्या आएगी यहाँ पर 20 के बाद 30 है, 6 फिर या 10 हो नेक्स्ट गया। डिजिट 10 आएगा डिफरेंस फिर 8 का आ रहा है 6 फिर 8 तो इस टाइप का कुछ बनेगा शायद इसमें सी ऑप्शन है ठीक है, उसका फाइन, ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, सो अगेन अ पेज इज टर्न एंड जितने भी रिमेनिंग पेजेस है उनका अगर हम सम करते हैं द नंबर ऑफ द पेजेस, सो इट विल टर्न आउट टू बी 195. तो वी हैव टू आइडेंटिफाई कौन सा पेज है व्हिच वाज टर्न. सो इफ यू सी, आप पहले सम निकाल लो तो अप्रोक्सीमेटली टोटल 20 पेजेस होने चाहिए, क्योंकि अगर आप सम निकालते हो तो 210 आ जाते हैं. अब इसमें से आप ऑप्शन पुट करके देखो, 5 एंड 6 का सम इज 11. 210 से अगर आप 11 माइनस करते हो तो 195 नहीं आएगा. 7 एंड 8 प्लस करके इफ यू माइनस 15 बिकॉज दैट इज द सम, विल गेट 195. सो इट शुड बी ऑप्शन बी. ऑप्शन बी. In 15th, again, we have to identify. So you can just again place options and आपको sequence identify हो जाएगा. So option C होना चाहिए. ऑप्शन सी. Okay. Then in 16th, again, दो numbers हैं which are coded form में they are given to us, and जो भी एक लेटर है यहाँ पे that is greater than 3 and each is different digit. So अगर sum of these numbers that is given, this value is given to us, then what is the difference between A and D? So again यहाँ पे आप just ensure करो that the letter you are taking or the digit that you are taking should be greater than 3. So we start with that, we in order to get again 2 here, so 3 के बाद next large होगा 4. So 4 के साथ what number should be there that we get 12 as the sum. So it should be 4 and 8. तो likewise आप करोगे तो directly you will get this number, and आपको difference बताना है between A and D, so it will be 3. ऑप्शन सी. Then say 17th question. So two statements that are not more than 2 figures on any page, and the total number of pages are 51. And statement 2 is that there is at least one figure on every page. So it means 51 जो minimum number of figures होंगे ही होंगे. Question है, are there more than 100 figures in that book? So हम कैसे decipher करेंगे यहाँ पे, because first statement is saying कि not more than 2 figures, but we are not sure, या हम नहीं solve कर सकते कि how many pages are having 2 figures. So I believe option C should be right, that the statements together, they're not sufficient to answer the question. ऑप्शन सी. In 18th, so given with the average of girls and boys in 2 different subjects, English and Hindi, and their total average of the marks of both girls and boys. So ये पूरी information given है, या आप इसको average वाले formula में आप लिख लो. Then इस वाले फाइनल फॉर्मूला में which is written for this, इसमें से आप यहाँ से और यहाँ से पिक करके you can put the figures and you will get this equation. When you solve this further simplify, तो आपको end में ये मिल जाएगा. Now from this same pattern में आप formula लिखेंगे, and because we have to find the value of x, so जो last वाले average के लिए formula होगा that will be written like this, and you will use this here so that आपके पास एक ही वेरिएबल बचे, या तो बॉयज हो सकता है या गर्ल्स हो सकते हैं. सो विल गेट द नंबर ऑफ बॉयज. इससे इस इक्वेशन में यू कैन पुट द वैल्यू ऑफ बॉयज एंड विल गेट द नंबर ऑफ गर्ल्स, एंड आपको पूरा एवरेज मिल जाएगा. सो इट वुड बी 7.8. ऑप्शन ए. Then next question.
So there's a family, 2 generations. These are the members of the family. There are 3 males, 3 females. There are 2 married couples, 2 unmarried siblings are there. And we are given with this information. So we've written this down here. And on this basis, we have to choose the right option. So it should be option B, that R is S's wife. Option B. Then 20th in a particular year, again 12th January is Sunday. So which should be the valid option here? So you need to solve this. Firstly, like for entire January, you can get that 31st January is Friday. So for rest of the months, like I'm not considering it to be a leap year and then I'm calculating it. So these are the months which are there. You have written down the number of days. You'll total the number of days, that will be 150. And then you'll divide this by 7 so as to get the number of weeks and the number of odd days which are left. So for 30th June, we'll see that 30th June will be Monday, because here 7 weeks out of 150 days we see is Friday, because we're calculating after this. So after Friday, next 3 days, Saturday, Sunday, and Monday would be there. Then for July, the options are, you can see 2 dates are there, 15th July and 12th July. So we'll calculate firstly what day should be for 15th. So that is not being, appropriately being fit into the options given. So we'll calculate for 12th July. So here, this becomes most valid one, because even 12th July is also not Sunday, even if it's a leap year. Option C. C बोल रहे हैं. 12th July is Sunday if the year is a leap year. But according to my calculations, it is turning out to be Saturday. अगर leap year नहीं है, then it is Saturday. अच्छा हाँ ठीक है. Leap year होगा तो एक day extra हो गया, तो Sunday हो जाएगा. Fine. Is a Sunday if the year is leap year is not a Sunday. But ये भी तो correct हुआ. अच्छा ये तो लीप ईयर में बोल रहा हूँ कि यहाँ पे मिस्टेक हुई. मैंने नॉट लीप ईयर के लिए कैलकुलेट किया है. हाँ यहाँ पे तो ऑप्शन सी वुड बी राइट. ठीक है. देन पैसेज. सो हियर वी सी द फॉलोइंग assumptions. So 21 क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर ए 1, 2 and 4 फिफ्थ इनवैलिड होना चाहिए. ऑप्शन बी 1, 3 and 5. 2 बोल रहे policies must be undertaken to strengthen the domestic private investment. Okay. Passage number 2. So question number 22. Most practical implications. So I believe 1, 3 and 4. Option C. ऑप्शन ए. A बोल रहा है 1 and 2. Okay. Passage number 3 में question number 23. तो यहाँ पे option A होना चाहिए. Assumptions हमें identify करना है. ऑप्शन सी. 3. Economic freedom has a positive impact on building human capital. बट यहाँ टैक्स रेट की भी तो बात हो रही है. वो भी डायरेक्ट ये है, मतलब लोअर टैक्स रेट इन कंट्री इनवेरिएबली ट्रांसलेट इनटू ग्रेटर इन्वेस्टमेंट. आई थिंक फिर ये इस वर्ड की वजह से इनकरेक्ट होगा, इनवेरिएबली नहीं होगा. Passage number 4, question number 24. So most logical and crucial message. I believe A, that urban local bodies must recover cost through user charges. ऑप्शन ए. Then in 25th, assumptions. So only 2 is valid. ऑप्शन बी. In passage number 5, we have to identify again the assumption. So 2 and 3 should be the valid ones. ऑप्शन सी. Okay. Then next question number 27. So the critical message of the passage. Option D, that inclusive agricultural growth is key to reduce poverty in the near future. ऑप्शन डी. Now again, few mathematical questions. So 2 statements. So R is greater than P as well as Q. So we've written it down. S is not the largest one. So we are given with these 4 numbers only. So among 4 numbers, which one is the largest? So we can get to the right answer using these 2 statements itself. And they are sufficient to get the right answer. ऑप्शन सी. Then 29th. So 2 statements again. N is a prime number. N leaves a remainder of 1 when divided by 4. So we first write down prime numbers. We are given that they should be between 10 and 20. So between 10 and 20, we have written firstly prime numbers 11, 13, 17 and 19. Now when you divide by 4, you have to check the remainder should be 1. So it is valid only in these 2 numbers, 13 and 17. So option C होना चाहिए. ऑप्शन डी.
डी बोल रहा टुगेदर बिकॉज अच्छा ठीक है, क्या पता दो नंबर आ रहे हैं इसलिए हो सकता है. देन 30th क्वेश्चन, तो टू स्टेटमेंट्स फिर से. द two numbers, the product is 21, sum is 10. तो you start with again 1 2 3, कौन से numbers का combination ऐसा हो सकता है. तो I got only one combination, 3 and 7. तो here I think C होना चाहिए right option. ऑप्शन सी. ठीक है. 31st question. So we are given with these directions, आप figure बनाइए, and we are given कि if the house faces to the east, that is this words, so what is the direction from starting point. So this is starting point, this is where we end, so it is northwest because this is east, so northwest. ऑप्शन डी. Now two statements again. So all numbers are divisible by 2, all numbers are divisible by 3. तो पहले ऐसे numbers आप identify कर लो, कुछ numbers लिख लो. Conclusion, all numbers are divisible by 6, तो ये true है. All numbers are divisible by 4, तो this is wrong, and I think only one conclusion right होना चाहिए. ऑप्शन ए. Then 33, so two statements, all cats are dogs, all cats are black. So all dogs are black and some dogs are not black. I believe only conclusion one हो सकता है. ऑप्शन सी. ठीक है, थोड़ा लग रहा था, कंफ्यूजिंग हो जाता है ये कभी कभी, क्योंकि इनडायरेक्ट मतलब ये रिवर्स में बात नहीं कर रहा, रेसिप्रोकल ट्रू नहीं है ना, क्योंकि डॉग्स भी है अलग से, वैसे डॉग्स भी तो होंगे. यहाँ पे सिर्फ कैट्स की बात हो रही है कि जो कैट्स हैं वो तो डॉग्स हैं ही, बट जनरली स्पीकिंग जो डॉग्स है, फिर हम ऑल डॉग्स ब्लैक नहीं बोल सकते हैं. नाउ अगेन ये की पैटर्न दे रखा है. सो हाउ मेनी ऑड नंबर्स आर फॉलोड बाय ऑड नंबर्स. सो 1 2 3 4 5 ऐसे कॉम्बिनेशन, तो 5 होना चाहिए. बी. ए की बी. बी. 6. बी ऑप्शन बी. सिक्स कौन सा है. अच्छा आई थिंक नहीं नहीं ये तो नहीं होगा, हमें 1 ऑड एंड नंबर 5. निकाल. 1 एंड 5, 3 एंड ओ 1 के हाँ साथ तो. हाँ, ये नहीं हुआ, ठीक है, 6 होगा. देन 35th में, सो वी आर गिवन दिस सीक्वेंस दे रखा है. ए इज 16th फ्रॉम लेफ्ट, मतलब यहाँ से. देन वी है 18th फ्रॉम राइट टूवर्ड्स दिस एंड. जी 11th है फ्रॉम ए टूवर्ड्स द राइट एंड थर्ड फ्रॉम बी टूवर्ड्स द राइट. तो आपको सबकी प्लेसिंग मिल जाएगी, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं था. तो टू आइडेंटिफाई हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन द रो, तो 41 होना चाहिए. ऑप्शन बी. Then again few statements, so आपने लिख लिया इसको symbolically, and to identify who amongst them is the youngest one. So I think one statement or three statement use करके भी we can get to the answer. ऑप्शन डी. ठीक है. Then how many integers are there between 1 and 100 which are divisible by 4, uh, which are not divisible by 4 but उसमें 4 as a digit आता है. तो पहले सारे numbers लिख लो, क्योंकि 1 से 100 है तो ज्यादा नहीं होगा. देन यू जस्ट चेक कि कितने डिविजिबल बाय 4 है. नॉट डिविजिबल बाय 4 है, सॉरी, तो उनको इंसर्कल कर लिया, एंड शुड बी 12 होना चाहिए. ऑप्शन सी. देन 38. So in this we are given with the volume, the masses of two metallic cubes P and Q. साइड की इंफॉर्मेशन हमें दे रखी है, दोनों की क्या रिलेशन है, मास की दे रखी है, एंड इसको हमने सिंबॉलिकली एक ही रिलेशन दे रखा है. तो U और V के बीच में हमें निकालना है रिलेशनशिप. सो U वी हैव रिटन डाउन, V लिख दिया हमने. तो M और N के बीच में ये हमें इंफॉर्मेशन दे रखी है साइड के बेसिस पे, और यहाँ से साइड की जो रिलेशनशिप है उससे आप वॉल्यूम निकाल सकते हो कि वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है साइड क्यूब. सो सिंबल्स आप पुट कर दो, तो सो दैट कोई कंफ्यूजन या मिस्टेक ना हो. एंड दोनों इंफॉर्मेशन को आप इस वाले फॉर्मूला में पुट कर दो, या आप इसमें भी पुट कर सकते हो, द आंसर विल बी सेम. सो दोनों m और x की वैल्यू आपने यहाँ से और यहाँ से यूज करी, एंड देन नाउ यू पुट द वैल्यू ऑफ, लेट्स से यू कैन पुट द वैल्यू ऑफ n हेयर, n, और अगर y नहीं, खाली n किसी एक की आप यहाँ पुट करो n या y में. सो y will cancel out, will be left with v is equal to u. ऑप्शन ए. ए बोल रहा है u is 4v, u is 4v. ठीक है, चलो सॉल्व करेंगे फिर से. देन 39th में एवरेज एज ऑफ टीचर, तो एवरेज का क्वेश्चन है, यहाँ पे आप लिख लो उसको इक्वेशन फॉर्म में. टीचर एंड 3 स्टूडेंट्स आर देयर, तो टोटल 4 कैंडिडेट्स हो गए. एंड देन ये भी दे रखा है डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ टीचर एंड द स्टूडेंट इज 20 years.
सो टी की जगह आप यहाँ पे पुट कर दो, ये वैल्यू आएगी 20 प्लस एस, और ये 3 स्टूडेंट्स की एज का सम, तो इंडिविजुअल्स 4 ही है, 20 फ्रॉम हेयर। अब इसको सॉल्व करो, विल गेट, यहाँ से स्टूडेंट की एज आ जाएगी एंड फिर से इस इक्वेशन में पुट करोगे तो गेट द एज ऑफ टीचर इज 35। ऑप्शन सी। Last question. So person bought a car, sold it for 3 lakhs. So selling price is 3 lakhs. Incurred a loss of 20%. So 20% of 3 lakhs would be 60,000. And cost price we have to calculate. So loss हमें दे रखा है, we calculated the value. So cost price minus the selling price, क्योंकि cost price ज़्यादा है तभी loss हो रहा है. And selling the cost price will turn out to be 3,60,000. ऑप्शन डी। डी, डी कैसे आ रहा है 375? यस, ऑप्शन डी। ठीक है, ओके चलो इसको विल सी अगेन। तो आपको और कोई डाउट है दिव्या? नहीं मानसी। Okay, thank you everyone for joining us on Ansarkari, and stay tuned for next set of 40 questions from 2020 CSAT paper.